Good afternoon, Namaste, Namaskar. Welcome to this event organized by IMC and BSE jointly. This is SEBI announced World Investor Week, 10th of October to 16th of October. SEBI is a regulator for the equity market and for the commodity derivatives market. And every year we celebrate this week as World Investor Week. And we obviously try and do several events to create awareness about the market, educate market participants, and of course, train them on risk management and so on. A few minutes ago, just a minute ago, we saw two fantastic videos. एक वीडियो था IMC चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जो संस्था कम से कम 115 साल पुराना है, और एक दूसरा वीडियो हमने देखा, बढ़िया वीडियो, जो BSE का है, जो 140 या 145 साल पुराना इंस्टीट्यूशन। ये दोनों संस्थाएं बंबई में हेडक्वार्टर्स दोनों के हैं। These two iconic institutions, legendary institutions, have contributed to the economic growth of this country for more than 1 century. Okay? And both these institutions have helped generate tremendous amount of wealth. Both these institutions have now, in the last 3 years, come together to do a series of events as awareness, training, and education programs to promote commodity derivatives for risk management and for investment. और IMC Chamber of Commerce and Industry एक SEBI accredited training institution. This is a SEBI accredited training institution for commodity derivatives. और हमारा देश में IMC एक ही Chamber of Commerce है जिसका पास SEBI accreditation है as a training institution for commodity derivatives. And therefore, investor resilience is the theme for this year. A smart investor conducts research before investing and diversifying his portfolio. बहुत अहम बात है ये, क्योंकि कोई भी पूंजी निवेश करना चाहता है मार्केट में, उसे अच्छा एक रिसर्च करना चाहिए, उसे कमर्शियल इंटेलिजेंस चाहिए, उसको प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, और उसको मार्केट नॉलेज चाहिए। तो इस प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केट नॉलेज होगा, और रिसर्च द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, निवेश करने का निर्णय, वो लगभग सही निर्णय होता है। So this is extremely important, and it's a message from SEBI during the World Investor Week 2020. Now allow me just 1 minute to share screen. I have a presentation to make, जो मैं आपको बताने वाला हूँ. Okay, let me start slideshow. Let me start with the slideshow. Okay. तो जैसे कि मैंने बताया, वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2022 IMC और BSE का एक जॉइंट वेबिनार है। हम आज बात करेंगे कमोडिटी डेरिवेटिव्स एज एन एसेट क्लास। क्या हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ये एसेट क्लास है? क्या इक्विटी मार्केट में जैसे आप पूंजी निवेश करते हो, क्या आप कमोडिटीज में भी कर सकते हो? इसका जवाब है हाँ, आप कमोडिटी डेरिवेटिव्स में भी पूंजी लगा सकते हो, फायदा उठा सकते हो इसका। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे 15, 20, 25 मिनट के लिए। तो कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमें हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट एसेट, पहला ध्यान हमारा जाता है इक्विटी मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि equities are known as investment asset class. Okay, तो आप इन्वेस्टमेंट बोलिए तो इक्विटी का और ही हमारा ध्यान जाता है। और कमोडिटीज का परसेप्शन जो है, जनरल परसेप्शन ओवर द लास्ट सो मेनी डिकेड्स, वो है इट इज अ कंजम्पशन एसेट क्लास। इक्विटी है इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, कमोडिटी है कंजम्पशन एसेट क्लास, क्योंकि हम कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं, whether it is crude oil or natural gas or gold or silver, copper, aluminum or palm oil
or cotton or sugar, all these are commodities we consume. Therefore, it is called commodity asset class. मगर पिछले 20 लगभग 20 साल में एक परिवर्तन आया है विश्व भर, जब कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट का एक अच्छा तरक्की हुआ है, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैव नाउ आल्सो बिकम एन एसेट क्लास. कमोडिटी डेरिवेटिव्स में आप पूंजी लगा सकते हो. जैसे आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है इक्विटी मार्केट में, कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है. तो कमोडिटीज आर नॉट ओनली कंजम्पशन एसेट क्लास, कमोडिटीज हैव आल्सो बिकम एन इन्वेस्टमेंट एसेट. क्यों हुआ है? क्योंकि कमोडिटीज कई बार have given investment in commodities is given far better returns than even the equity market. ये तो एक अहम बात है. दूसरा एक अहम बात है, यूएसए में commodity markets are bigger than equities market. Can you imagine this? और हमारा देश में equity market बड़ा है, commodity market छोटा है, but हमारा commodity market भी आगे बढ़ रहा है. SEBI is doing a lot of things to deepen and widen the market, and over a period of time हमारा commodity derivative market भी बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, and it become really big. चीन इतना बड़ा देश है विश्व में, it has the second highest GDP, about 12 or 13 trillion dollars after the United States. तो चीन का जो विकास हुआ है, तरक्की हुआ है पिछले 25-30 साल में, it has been substantially commodity driven. हम वही दिशा में चल रहे हैं. हमारा भी आगे जा करके आगे 20-25 साल में our growth also will be commodity driven. तो मैं एक पहला स्लाइड हम देखेंगे क्या. तो ये है, ये मेरा, दिस इज माय ओपिनियन, ये मेरी राय है कि ये सब इंडिया के ग्रोथ सेक्टर्स हैं. आगे 5, 10, 15, 20, 25 साल का बोलिए, ये जो सेक्टर्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 8 सेक्टर्स मैंने दिया है. इसमें 8 सेक्टर आर कॉल्ड ग्रोथ सेक्टर्स. दे गोइंग टू ग्रो. इसमें द लास्ट 3, एक है हेल्थ केयर और एक है एजुकेशन, तीसरा है लीजर. हमने इसको लोअर केस में टाइप किया क्योंकि ये जो 3 है, दे आर सर्विसेज. ओके, मगर दैट इज हेल्थ केयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस एंड लीजर एंड एंटरटेनमेंट सर्विस. बट द फर्स्ट 5, food and agriculture, textiles and clothing, housing and infrastructure, energy, transportation or mobility, these 5 are growth sectors, and all these 5 growth sectors have a strong commodity implication. इस 5 ग्रोथ सेक्टर जो है, इसमें कमोडिटीज का एक अहम भूमिका रहेगा. जब हम एग्रीकल्चर और फूड सेक्टर के बारे में बात करते हैं, agriculture commodities, obviously we have to discuss agriculture commodities. How can you discuss the food sector without discussing agriculture? Similarly, when you talk of textiles and clothing, और हमारा textiles and clothing का जो सेक्टर है, बहुत बड़ा है, बहुत अहम है हमारा देश के लिए, बहुत अहम है हमारा आर्थिक विकास के लिए और हमारा निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट. And therefore textiles and clothing, when you talk of this big sector with great potential, commodities have a role to play. So what is textiles and clothing sector without fiber, without cotton, without jute, without silk, without synthetic fibers? All these are commodities. So textiles and clothing sector, the growth and development of textiles and clothing sector is intrinsically interwoven with the fiber market, that is cotton, silk, jute, synthetic fiber, etc. तीसरा है हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. जो हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र है, बड़ा सेक्टर है, जिसका एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ यू विल सी ओवर द नेक्स्ट 15, 20, 25 years. और इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाउसिंग सेक्टर में 60 to 70% of the cost of
an infrastructure project is accounted for by commodities. कोई भी infrastructure project आप लीजिए, housing project, what are the main component? It is steel, it is cement, and it is aluminium, it is copper. Okay? They're all commodities, correct? For housing and infrastructure sector में भी commodities का एक बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा. Then energy. What is energy? Talking about crude oil, talk about natural gas, talk about coal, which is the feedstock for thermal energy. All these are energy products. And we need energy, we need power to drive our economic growth. Energy fuels economic growth. कोई आर्थिक तरक्की शायद ज्यादा हो नहीं पाएगा without using energy, without using power. But power is a sector which will grow over the next 2-3 decades. And when we talk of energy sector, हमें समझना चाहिए crude oil आता है इसमें, कोयला आता है, इसमें natural gas आता है, biofuels भी होगा. For energy sector is very important. Then we have transportation and mobility. Transportation, roadways, railways, airports, seaport, all kinds of mobility. हम एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, you need the transportation sector, which primarily is mobility. And when you talk of this transportation sector, all those vehicles, whether it is lorry or passenger car, or it's a railway engine and bogies, or it is aircraft or the ship or whatever, they're all commodity intensive. They're all metals intensive, and therefore commodities will have a big role to play in transportation and for our growth over the next 15, 20, 25 years is going to be substantially commodity intensive and commodity driven. तो यही है उसका स्लाइड. तो ये जो commodity basket है, उसमें आता है energy products, उसमें आता है metals. क्या क्या metals है? We have precious metals like gold and silver. We have industrial metals like steel and iron ore. And you have base metals like aluminium, copper, nickel, zinc, tin, lead, etc. Then of course you have agriculture commodities, जो है whether it is rice or wheat or pulses, coarse grains, sugar, cotton, oil seeds and oils, they're all agriculture commodities. And most of these agriculture commodities and most of the energy products and most of these metals are products of our daily use, and that is why they have been called a commodity, a consumption asset class. And therefore our growth over the next decades, 2-3 decades, will be definitely commodity intensive and commodity driven. और इसी के लिए हमें commodity market के बारे में जानकारी अवश्य होता है. तो और उसका एक I think that will also open up opportunity for investment and to benefit from the movement or dynamics of the commodity. तो हमारा देश है, भारतवर्ष है, अभी भी एक बड़ा उत्पादक है. We are large producers of commodities, we are large processors of commodities, we are large consumers of commodities, we are large importers of commodities and exporters of commodities, variety of commodities, whether it is food, fiber, metals, energy. We have a big role to play as a producer, processor, consumer, importer, or exporter. I think this role will continue to expand over the next 15, 20, 25 years. Therefore, our size of our production, size of our consumption, size of our trade will expand as far as commodities are concerned over the next 15, 20, 25 years. And therefore, क्योंकि commodity हमारा जिंदगी में उसका एक अहम भूमिका रहेगा, and it is extremely important that market participants or people at large will have to benefit from the future growth trends. Okay, and therefore a close study of and a good knowledge
about commodity markets will benefit market participants. Particularly, I'm addressing the younger generation who must now start tracking commodity markets. So you have to gain product knowledge. You have to gain market knowledge. You should start tracking the dynamics of the market and the drivers of the market. तो एक बार हमें product knowledge और market knowledge हम सीख लिया, और मार्केट में क्या है, मार्केट डायनामिक्स क्या है, मार्केट का ड्राइवर्स कौन कौन से फैक्टर्स मार्केट को ड्राइव करते हैं, इसकी जानकारी हमें मिल जाती है, तो we will become quite knowledgeable as far as commodity are concerned. और उस नॉलेज हमें एक नया रास्ता दिखा सकता है इसमें हम पूंजी निवेश करने के लिए, to benefit from investing. Now हमारा देश जो है through the trade route and through the investment route, Indian economy is gradually integrating with the global economy. Likewise, Indian markets are integrating with the global market, and therefore हमें एक global perspective चाहिए as far as commodity markets are concerned, क्योंकि हमें हमारा देश का सप्लाई और डिमांड फंडामेंटल उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, there is no doubt at all, but that is not enough because markets are integrating. Indian market is integrating with the global market, and therefore we must now have a 360-degree view of the global commodity market and the global economy, and therefore Indian market is going to be subject to global influences, and therefore we need to understand the global market dynamics and global market drivers, which will in turn impact our domestic commodity market supply and demand fundamentals. Now हम बात करते हैं एसेट क्लास या इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट. तो कहीं तरह के एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है जहां आप पूंजी निवेश कर सकते हो. यू हैव द इक्विटी मार्केट, ऑफ कोर्स करेंसी मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो. और आजकल तो एक नया, आजकल यानी पिछले 7-8 साल में 10 साल में एक नया एसेट क्लास निकला है, दैट इज आर्ट. लोग आर्ट में भी पैसा लगाते हैं. आगे जा करके देयर विल बी बिग ट्रेड as far as sorry art is concerned. Therefore all these are becoming asset class. Okay? तो जैसे पहले मैंने बताया वैसे जनरली इक्विटी को हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास और कमोडिटी को कंजम्पशन एसेट क्लास, मगर पिछले 20 साल में एक परिवर्तन आया है. कमोडिटीज हैव आल्सो नाउ बिकम इन्वेस्टमेंट एसेट्स, और लोग उसमें पूंजी लगाते हैं और उसका फायदा भी उनको मिलता है. विश्व भर अवेयरनेस अबाउट commodities as an investment asset, that awareness is rising. A huge flow of financial capital into commodity derivatives market for purpose of investment, whether it is hedge fund, mutual fund, pension fund. All the funds play a big role in investing in commodities and in benefiting from commodity market dynamics. Anita, I want you to mute everyone. Okay. Okay. Therefore, तो इसमें क्या है, commodity markets or commodity derivatives market are generally for hedging. If you are in the physical trade of commodities, you face price risk. So to manage your price risk, because the markets are volatile, you have to manage your price risk, and to manage your price risk, you have to go to a commodity derivatives market, to an exchange like the BSE, and then manage your price risk by taking a position in the derivatives market. Okay, but beyond hedging, as I said earlier,
commodity derivatives also offer investment opportunity. It's also an avenue for investment. Okay. Now, why should you invest in commodity derivatives? Of course, आपको है फिक्स्ड इनकम है, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हो, डेट इंस्ट्रूमेंट में डाल सकते हो, या इक्विटी में डाल सकते हो पैसा, whatever, all that. But why invest in commodity derivatives? Because commodities have many times, I'm not saying all the time, but commodities have many times outperformed other investment assets. Commodities have many times given better returns than even equities. Okay, you look at the history of the last 20 years. Now, I will give gold as a classic example of how gold, investment in gold, say over the last 15 years, समझिए ना आप analysis करिए over the last 15-20 years, how gold has outperformed most of the time, and it is given a very good return. Particularly मैं खास करके आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ 2001 से लेकर के 2012 तक gold prices increased year on year double digit, and you can imagine the kind of 12 years in a row double digit increase in prices, and you can imagine the kind of returns gold would have. Okay, all that, and therefore commodities have often outperformed other assets. दूसरा है commodity का अच्छा portfolio diversifier, क्योंकि आप वो कहते हैं ना, don't put all your eggs in one basket. तो आपका सब इन्वेस्टमेंट सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में, या सब इन्वेस्टमेंट सिर्फ इक्विटी में, या सब इन्वेस्टमेंट और कहीं रियल एस्टेट व्हाटएवर, वहां डालना उचित नहीं है. आपको आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. उसमें पोर्टफोलियो आप जब डाइवर्स करते हो, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसमें कमोडिटीज का भी एक commodities must play a part, and therefore they are a good portfolio diversifier. And commodities are also seen as safe haven asset. For example, again, gold is traditionally called a safe haven asset. जब भी दुनिया में कहीं भी geopolitical uncertainties हो जाता है, then equity market will go down and commodity market will go up, and gold is one which immediately reacts to geopolitical tensions and uncertainties, and gold prices go up, and that's why gold is called a safe haven asset. Gold is also a good hedge against inflation. पिछले 100 साल का हम आंकड़े देखेंगे तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, गोल्ड का भी भाव बढ़ा है, for it's a good hedge against inflation. Very important. And during geopolitical uncertainties, as I said, commodities attract greater investment attention because when during times of uncertainty, people exit the equity market and then move on to safe assets, and commodities are one of the safe assets. And globally, investor awareness is rising about the importance of commodities. Now, investment in commodity derivatives. Why should you, again, the question is, why should you invest in commodities? Most important, this derivatives trade happens in a very organized marketplace. BSE is a market जहां buyers और sellers आते हैं और trade करते हैं. It's a very well organized marketplace, which is very important. BSE जैसे exchange का internal control system जो कहा जाता है, काफी robust है, काफी मजबूत है. Number one. Number two, there are a large number of participants. ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 या 10 लोग आके व्यापार करते हैं, नहीं. There are hundreds or even thousands of people who come and trade commodity derivatives. और इसमें this is anonymous. एक दूसरे को जानने का कोई मौका नहीं है. किसी को मालूम नहीं आपने कितना ट्रेड किया है. It is anonymous trading.
ओके। और तीसरा है ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि एक्सचेंज आपको नहीं बताएगा कौन ट्रेड कर रहा है, मगर एक्सचेंज जरूर आपको बताएगा किस भाव में व्यापार हो रहा है। therefore market at large will discover prices, it's called price discovery, and वो काफी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है ये प्राइस डिस्कवरी का, जो कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में मिलता है, जो फिजिकल मार्केट में नहीं मिलता है। अभी फिजिकल मार्केट ट्रेडर जो है, हमने बेच दिया 100 टन चीनी और आपने ले लिया 100 टन चीनी मेरे पास से, मैं 1 महीना बाद आपको डिलीवर करूंगा। ये जो ट्रांजैक्शन है, इट इज ए इट इज अ वन टू वन ट्रांजैक्शन बिटवीन ए सेलर एंड ए बायर। इसमें मार्केट में सभी लोगों को पता ही नहीं लगेगा, एंड इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता है, क्योंकि मैं एज अ सेलर आई मे डिफॉल्ट और यू एज अ बायर यू मे डिफॉल्ट, सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, इट्स कॉल्ड काउंटर पार्टी रिस्क। एक्सचेंज में जब ट्रेड होता है, सेलर वहां भी सेलर है, वहां भी बायर है, एक काउंटर पार्टी रिस्क लगभग नहीं काउंटर पार्टी रिस्क नहीं होता है, क्योंकि एक्सचेंजेस के जो कंट्रोल सिस्टम है काफी काफी मजबूत। और न्यूट्रल प्लेटफॉर्म विद एनोनिमस ट्रेड हमने बात किया है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में ही इसका व्यापार होता है। नो काउंटर पार्टी रिस्क, ये भी हमने बोल दिया। ओके, और ईज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट, बहुत आसानी से आप उसमें व्यापार कर सकते हैं। सेटलमेंट सिस्टम, एवरीथिंग इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल लेड आउट, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड डेली मार्क टू मार्केट। आपका जो भी मुनाफा या नुकसान है, on a daily basis you will get to know whether you made some profit or you've lost money based on the price fluctuation. There is a mark to market system which creates much better integrity for the market. For these are safety measures as far as commodity derivatives are concerned. Now इसमें regulatory oversight बहुत is very very important. तीन रेगुलेटरी ओवरसाइट, देयर आर 3 tier ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। एक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लाइसेंस देती है कमोडिटी एक्सचेंजेस को, द गवर्नमेंट ग्रांट्स लाइसेंस। द सेकंड लेवल ऑफ रेगुलेशन इज सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो हमारा देश में इज अ सुपर रेगुलेटर, यानी कि वो इक्विटी एंड कमोडिटी डेरिवेटिव दोनों मार्केट का रेगुलेट करता है साथ में। एंड उसका भूमिका है, उसकी जिम्मेदारी है टू ओवरसी द एक्सचेंज एक्टिविटीज। they also have a system of surveillance to ensure that market integrity is intact and that trade takes place in an orderly manner and there is growth of the market. Okay? और तीसरा लेवल है रेगुलेटरी ओवरसाइट का। एक्सचेंज खुद एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स कॉल्ड SRO, सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सचेंज का क्या काम है? इट प्रोवाइड्स ए न्यूट्रल electronic platform for trading. It has standardized contracts for trade where people will trade. आपको कोई contract term में you don't have to negotiate, you have to negotiate only the price. बाकी all terms of contract are highly standardized and exchange में काफी अच्छा मजबूत control systems है, delivery system है, settlement system है। So this is a market, derivatives market is very well scientifically run and well tested, time tested system of a marketplace. So I'll stop here at this point of time. I want to thank all of you. I also issue a disclaimer. I am not a trader. I don't hold any trading position either in the physical market or in the derivatives market. I'm a student of the market. Also, I'm a teacher of the market. And therefore, let me say good luck. God bless you all. Take care. I will continue to be on the show. I'll now invite Shraddha from BSE to make her presentation. Shraddha, the floor is yours.
Nita, is Shraddha there? Yes, sir. Want to call her? Yeah. Yeah. Okay, friends, I'm sure Shraddha is going to join very soon. And I'm sure she's going to make a good presentation. In the meanwhile, friends, if you have any questions, write your name and write your questions in the chat box. If we have time, of course, we will try and respond to your questions. I'm sure there will be a number of questions. There's no doubt at all. And write your name and respond. I'll also ask Anita Naik of IMC to write her email ID. You can write to her also. We'll try and respond to your questions. We'll request Shraddha also to post her ID. Therefore, I think we'll make this interactive. And I also want to let you know that BSE and IMC continue to do a very large number of events over the last 2.5, 3 years. Now we've been doing at least 2 events every month on a range of commodities. And this is primarily to create awareness amongst value chain participants and amongst investors. And this has been a big hit, a lot of huge amount of interest by participants and appreciation. And therefore, I would request. I'm sure Anita is going to keep all of you in the mailing list and keep messaging you, emailing you from time to time about all our future events. And my request is you all must continue to participate so that the more events that you attend, the more knowledge that you will be able to gain. Anita? Yes, sir. She will come in sometime, sir. Means what? Do we wait then? No, she's already there, sir. Okay, she's here. Shraddha, we are waiting for you. Yes, sir. Am I audible? There's some network Yes, issue. I understand. I understand. You're okay. Yeah, you're okay. We can hear you. Please go ahead. Welcome. Thank you so much, sir. So good evening, one and all. And today I am here to give you a brief about commodity derivatives as an asset class at the BSE platform. So as sir have mentioned us about what commodities are and how these commodities play an important role and किस तरीके से हम इसमें working कर सकते हैं और why are these commodities as an asset class important for us. So considering BSE as an exchange here, क्या in commodities का महत्व रहेगा और what role does BSE plays here and किस तरीके से हम इन commodities में अपने आप को hedge करके इसमें working करके किस तरीके से एक हम price risk mitigate अपना कर सकते हैं. So Anita ji, can we move on to the next slide? Yeah. Go. I hope I am audible to you all. Perfect. Please go ahead. Okay, so when I talk about the value proposition of the BSE, so BSE is the first and the only universal exchange with the presence of 148 years and in पूरे अप्रोक्स 150 सालों का जो एक्सचेंज का एक इतिहास रहा है उसमें 1400 से भी अधिक मेंबर ब्रोकर्स है जो एक्सचेंज के साथ जुड़े हैं और 10 करोड़ रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स है जो एक्सचेंज के साथ में यहाँ पे जुड़े हुए हैं. टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो फास्टेस्ट ऑफ द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है एक्सचेंज का जो एक्सचेंज यूज करता है बिकॉज ऑफ विच अ पर्सन कैन ट्रेड विद मियर जस्ट द स्पीड ऑफ 6 माइक्रोसेकेंड्स. तो मात्र 6 माइक्रोसेकेंड्स के अंदर आपका जो ट्रेड है वो एक एग्जीक्यूट हो जाएगा. क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का अगर हम पार्ट देखें तो ICCL इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज AAA रेटेड अपना BSE का एक सिस्टर कंसर्न है जहाँ पे आप अपना क्लियरिंग एंड सेटलमेंट उतने ही एफिशिएंटली कर सकते हैं जितना एफिशिएंटली आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे. रिस्क एंड सर्विलेंस का अगर मैं बात करूँ तो काफी रोबस्ट मैकेनिज्म है एक्सचेंज का जो एक्सचेंज यूज करता है और इसी के चलते आज पूरे विश्व भर में दूसरा इंडिया में फर्स्ट एक्सचेंज ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है. कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अगर मैं यहाँ पे ऑनलाइन फ्यूचर्स मार्केट का अगर बात करूँ तो
किस तरीके से ये वर्किंग होता है और क्या यहाँ पे जो है रोल आता है एक्सचेंज का, सबसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक्सचेंज इज अ प्लेटफॉर्म वेयर अ पर्सन can come and can come buy and sell their positions or give deliveries at a future. बहुत ही सिंपल है, एक्सचेंज जो है एक राउटिंग होता है जिसके थ्रू आप अपना पोजीशन अगर आप बाय करना चाहते हैं, आप सेल करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं और एट फ्यूचर डेट पे आप डिलीवरीज ले सकते हैं। आप अपना प्राइस रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं बाय लॉकिंग अप द प्राइसेस एट अ फ्यूचर डिलीवरी डेट। एंड वोलेटिलिटी को अगर हमें अवॉइड करनी है तो हम अपने आप को यहाँ पे हेज करके प्राइस रिस्क का जो वोलेटिलिटी है वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। आपको लिक्विडिटी यहाँ पे मिलेगी, ट्रांजैक्शनल सेफ्टी मिलेगी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, इन सभी का यहाँ पे काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और आपको एक्सचेंज में सिंस डिलीवरीज भी एक्सचेंज का पार्ट है तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, शिपमेंट, इन सभी का सर्विस रिलेटेड जो है यहाँ पे सभी में आपको हेल्प, सहूलियत मिलेगी। एक्सचेंज एलिमिनेट करता है काउंटर पार्टी रिस्क को, क्रेडिट रिस्क को एंड रिजेक्शन ऑफ डिलीवरीज को। सो ऐसा नहीं होगा कि एक्सचेंज के थ्रू जो आपको डिलीवरी जाएगा तो वो आप यहाँ पे कर ही नहीं सकते हैं। प्रोवाइड्स बेटर डिस्कवरी एंड रियलाइजेशन, मतलब यहाँ पे आपको प्राइस जो है वो बेटर, आपको एक बेटर वे में मिलेगा और आपको अंडरलाइन सिंस जो अपना बेस फ्यूचर प्राइस, कोई भी फ्यूचर का जो है एक अंडरलाइन उसका बेस प्रोडक्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई टॉक अबाउट आलमंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, सो उसका बेस जो है आलमंड ही रहेगा। फिजिकल मार्केट में जो आलमंड का भाव चल रहा है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द अंडरलाइन प्रोडक्ट फॉर द आलमंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। Can we move on to the next slide? So BSE has launched commodity derivatives on 1st October 2018 with the tailored products of Oman crude oil, which was the first deliverable corporate contract. Exchange is first to launch, and I am very, very happy to announce that Exchange is first to launch options on goods contract in gold, mini and silver kg on 1st June 2020. Exchange BSE has also implemented the negative price trading facility in its system. So since the crude oil issue had happened into the market, wherein the crude prices had went on to the negative, tabhi exchange, since I've mentioned the robust mechanism of exchange, so you can see the efficiency wherein BSE has also implemented a negative price trading facility in its system. BSE is the only exchange in the world to launch almond in-shell futures contract, which is a unique contract in itself, and globally केवल BSE पे ही ये contract है जहाँ पे आपको trading करने मिलेगा। BSE ने काफी सारे एरियाज में वेवर दिया हुआ है, कॉस्ट वेवर दिया हुआ है, चाहे फिर वो डिलीवरीज का पार्ट हो या स्टोरेज असेइंग का, डिलीवरी में स्टोरेज और असेइंग का पार्ट है तो BSE ने काफी सारी जगहों पे वेवर दिया है फॉर लार्जर पार्टिसिपेशन एंड टू गिव कंफर्ट टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. Exchange also accepts BIS standard gold silver bonds along with LBMA on its platform, and gold mini options on goods contract में BSE was the first to complete deliveries. अब अगर मैं आपको दूसरा एक पहलू बताऊं एक्सचेंज का, तो BSE एक इंडियन कमोडिटी मार्केट है जो कि वर्किंग ग्रुप जो कि न्यू कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट्स पे वो वर्क करता रहता है एंड स्टडी, एंड there's a continuous study going on commodity hedging disclosures by Indian companies. Can we move on to the next slide? There are certain associations and there are be it any commodities that BSE has launched, there are certain associations जिसके साथ में BSE ने जो है अपने एसोसिएशन के साथ MOU किया है. So here you can see the most of the associations are there for gold and silver. यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्री कमोडिटीज में भी एसोसिएशन के साथ में इन्होंने एक्सचेंज ने जो है वो एसोसिएशन के साथ MOU किया है, एंड देन चाहे फिर वो बेस मेटल्स हो, चाहे स्टील हो, स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन सूफी के साथ में MOU किया है. देयर आर several other associations from pan India in terms of all the basket commodities that exchange has. Next slide. So just give you a brief about the timelines of the commodity that exchange has launched. So since 2018 से 2021 तक जितने भी commodities हमने launch किए वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, and BSE is the first exchange to launch options and goods contract in gold, mini and silver kg. So पूरे विश्व भर में
अगर मैं बताऊं सबसे यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सचेंज के पास में है, चाहे फिर वो आलमंड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हो, ऑप्शंस ऑन गुड्स गोल्ड मिनी सिल्वर केजी हो, चाहे फिर वो स्टील फ्यूचर्स हो, और चाहे फिर वो कॉटन G34 कॉन्ट्रैक्ट है, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में एक यूनिक माने जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ ये तस्वीरें हैं हमारे कमोडिटीज की लॉन्च की, जब कमोडिटीज लॉन्च हुआ था, कॉटन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ था, जब स्टील लॉन्च हुआ था, और आलमंड हमने पीक कोविड के समय हमने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन वर्चुअली ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लॉन्च हुआ था। एंड जब हमारी प्रोडक्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग होती है तो वो भी किसी तरीके से सभी की मौजूदगी में होती है। नेक्स्ट स्लाइड। सिंस मैंने आपसे जैसे अभी मेंशन किया कि एक्सचेंज में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है दोज आर कंपल्सरी डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। सो यहाँ आप देख सकते हैं चाहे फिर वो गोल्ड हो, गोल्ड मिनी हो, सिल्वर हो, गुआर सीड, गुआर गम, आलमंड, स्टील, कॉटन G34, सभी कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरीज हुआ है। सो BSE इज द ओनली एक्सचेंज वेयर इन फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स लॉन्च, हर कमोडिटी फर्स्ट मंथ ऑफ इट्स लॉन्च में आपको डिलीवरीज जो है वो देखने के लिए मिली होगी। एंड till date a total 2,83,542 यूनिट्स का जो है हर कमोडिटी मिला के डिलीवरी हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। So when I talk about the hedging opportunities and when I talk about why one should hedge, who should hedge, and what is hedging, firstly just giving you a brief about what is hedging। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपसे एक्सप्लेन करूँ तो हम एक पोजीशन क्रिएट करते हैं अपना एक्सचेंज पे विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द फिजिकल मार्केट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिकल मार्केट में अपना एक बाइंग पोजीशन बना रखा है, ठीक है, सो आप एग्जैक्टली अपना जो है अपोजिट पोजीशन एक्सचेंज पे बनाएंगे, तो आप एक्सचेंज पे अपना सेल पोजीशन करके रखेंगे। और यहाँ पे हमारा सोल ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस और टू लिमिट द रिस्क एसोसिएटेड विद द एडवर्स प्राइसेस। अभी ऑब्जेक्टिव हमारा कैसे पूरा हो रहा है? सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोला, अगर हमें पता है, मैं आलमंड का यहाँ पे बात करती हूँ, अगर हमें लग रहा है कि आज 350 का पर केजी के हिसाब से भाव है और भाव अभी ऊपर जाने वाला है, और हमने फिजिकल मार्केट में जो है हमने ऑलरेडी हमारा इंपोर्ट हुआ मटेरियल फिजिकल मार्केट में आएगा, देन वी विल बी सेलिंग इट ऑफ। सो एक्सचेंज पे भी सिंस हमारा वहाँ पे ऑलरेडी मटेरियल ऑन द वे है एंड वी आर गोइंग टू सेल इन द फ्यूचर्स मार्केट, सो हम यहाँ पे भी टू जस्ट हेज आवर पोजीशंस, हम यहाँ पे भी अपना एक इक्वली अपोजिट पोजीशन लेके रख लेंगे, सो दैट एज सुन एज हमारा फिजिकल मटेरियल आए एंड उस टाइम अगर रेट्स बढ़ जाते हैं और उस टाइम अगर हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है तो हम अपना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम यहाँ पे अपना जो है एक्शन ले सकते हैं। Who all can hedge here? So जो भी फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है और जितने भी लोग जो जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड हो गया, आलमंड हो गया, टर्मरिक हो गया, स्टील हो गया, तो जितने भी फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो लोग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये एक मेयर एक टूल है जिसके थ्रू आप हेजिंग कर सकते हैं और लॉक इन कर सकते हैं अपना प्राइस विद अपना रिस्क विद ऑप्टिमम प्राइसेस। एंड बहुत ही सरल है ये समझना कि हमें क्यों हेजिंग करना चाहिए, ताकि हमारे जो लॉसेस है वो हम लिमिट कर सके और हमारा जो प्राइस रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। सो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एक्सचेंज पे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स है अभी BSE आलमंड, स्टील फ्यूचर्स, टर्मरिक, कॉटन, गोल्ड मिनी, इन सभी का एक ब्रीफिंग मैं आप सभी के साथ क्विकली शेयर करना चाहूंगी। अगर एग्री कमोडिटीज का मैं बात करूँ तो आलमंड और टर्मरिक और जो है हमारा यहाँ पे ये 21st डे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट नया एवरी मंथ स्टार्ट होता है। और वही स्टील, कॉटन और गोल्ड मिनी जो है यहाँ पे ये फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च मंथ एंड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कैलेंडर ये लॉन्च होते हैं। If 21st is a trading day, so 20th would be the delivery, every delivery month का last trading day, that is 20th would be your आपका last trading day, and अगर हमारा first है तो last trading day would be our last working day would be our delivery date. Trading session in agri for almond and turmeric 9 से 5 का हमारा टाइम होता है। For steel and gold mini it is 9 AM to 11:30, 11:55, and for cotton it is 9 AM to 9 PM. Trading unit for almond 1000 kg, for steel it is 10 metric tons, for turmeric 10 metric tons, for cotton J34 25 bales, gold mini 100 grams. Base value for almond is 10 per kg, steel is rupees per metric ton, turmeric it is rupees per quintal, cotton it is rupees per bale, and gold mini it is rupees per 10 grams.
Maximum order size is for almond it is 20,000 kgs. For steel billets it is 500 metric tons. For turmeric it is 250 metric tons. For cotton J34 it is 1200 bales, and for gold mini the strike price is of rupees 250. So अब यहाँ पे आपको लगेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस क्या नई चीज है. सो गोल्ड मिनी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ हम ऑप्शंस की बात पे प्राइसेस आर इनटू स्ट्राइक प्राइसेस. सो स्ट्राइक रेट्स एवरी 250 के इंटरवल्स में आपको वहाँ पे स्ट्राइक रेट्स दिखेंगे जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं. टिक साइज अगेन सभी का अलग अलग रहेगा. सो आलमंड का 10 पैसा रहेगा, स्टील का 10 रुपया टिक साइज है, टर्मरिक 1 रुपया है, कॉटन 10 रुपया है, एंड गोल्ड मिनी 0.25 पैसा. प्राइस कोड आलमंड में नवी मुंबई है, स्टील का रायपुर है, टर्मरिक अनपॉलिश निजाम फिंगर निजामाबाद रहेगा, कॉटन J34 सिंस नॉर्थ बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट हनुमानगढ़ रहेगा, गोल्ड मिनी अहमदाबाद. नेक्स्ट स्लाइड. डेली प्राइस लिमिट विल वेरी फ्रॉम कमोडिटी टू कमोडिटी. तो फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सो अगर आलमंड है तो यहाँ पे आपका जो है डेली प्राइस लिमिट इसमें अलग हो जाएगा. स्टील है तो उसका डेली प्राइस लिमिट 4% और 2% 6% जाएगा. टर्मरिक है 4% 2% 6% जाएगा. कॉटन अगेन 6% है. और गोल्ड मिनी ऑप्शंस का तो इसका सिस्टम ही पूरा अलग होता है. इनिशियल मार्जिन, the SEBI has decided margin amount for all the commodity derivatives contract जहाँ पे आप trading कर सकते हैं. So as soon as one person wants to trade, so आपके broker आपको बता देंगे कि कितना आपको margin देना होता है. So for example, if I talk about almond, so आपको 12% initial margin plus 1% 13% margin amount आप दे करके trade में enter कर सकते हैं. एडिशनल और स्पेशल मार्जिन आपका तभी इम्पोज होता है जब मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तो एक्सचेंज और रेगुलेटर्स की तरफ से ये आपको पहले ही इंफॉर्मेशन आ जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. सो अब अगर मैं मैक्सिमम अलाउेबल पोजीशन का बात करूँ, सो अगेन कमोडिटी टू कमोडिटी ये काफी वेरी करता है. आलमंड हो, टर्मरिक हो, स्टील हो, कॉटन हो, गोल्ड मिनी ऑप्शंस हो, इन सभी का मेंबर वाइज, क्लाइंट वाइज, नियर मंथ, करंट मंथ, इन सभी जगह पे वो काफी वेरी करेगा. डिलीवरी यूनिट हैज टू बी सेम एज द ट्रेडिंग यूनिट. सो आप देख सकते हैं कि आलमंड में 1000 kgs है, सो स्टील में 10 मेट्रिक टन है, टर्मरिक में 10 मेट्रिक टन है, कॉटन में 25 बेल्स है, एंड गोल्ड मिनी में 100 grams है. Delivery period margin has to be same for every commodity. So it is 3% plus 5 days, 99% VAR of spot price volatility, or 25% or 20%, whichever is higher. For gold it is 25%. डिलीवरी सेंटर्स नवी मुंबई, जैसे कि जो हमारा प्राइस कोटेशन है वही हमारा डिलीवरी सेंटर होता है. सो नवी मुंबई फॉर आलमंड, स्टील के लिए रायपुर, टर्मरिक के लिए निजामाबाद, कॉटन के लिए हनुमानगढ़, एंड गोल्ड मिनी के लिए एक्सचेंज डेजिग्नेटेड वॉल्ट एट अहमदाबाद. एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स टर्मरिक में सांगली, इरोड और बासमत है, और कॉटन में बठिंडा, सिरसा, अबोहर. नेक्स्ट स्लाइड. So her contract में there is a quality specification over which the contract is being worked upon. और अगर मैं यहाँ पे आलमंड का बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आलमंड इनिशियल नॉन पेरियल जो इम्पोर्टेड फ्रॉम कैलिफोर्निया है वही जो है यहाँ पे फोकस किया जा रहा है. सर्टिफाइड क्रैकआउट आपका 70% होना चाहिए, जिसका नेट एडिबल यील्ड 60% होना चाहिए. बिलो उसके रिजेक्ट हो जाएगा. अलावेबल क्रैकआउट 68% हम रखते हैं. मोर देन 73% नो एडिशनल प्रीमियम. Count size we have introduced in our contract, that is 2730 का count size यहाँ पे रहेगा. Above 30 count exchange पे जो भी माल है वो आपका reject हो जाएगा. Calculation of crackout would be as per the net edible yield and classifications. इसके और भी various classification दिए हुए. इसी तरीके से steel में भी there's क्वालिटी स्पेसिफिकेशन जो रहेगा. टर्मरिक में भी है, कॉटन में भी है, एंड गोल्ड मिनी ऑप्शंस में भी है, वेर इन 995 प्योरिटी का मटेरियल का गोल्ड बास आपका सिलेक्ट किया जाए, आपका वहाँ पे अप्रूव किया जाए. नेक्स्ट स्लाइड. So there are so now SEBI has also allowed foreign participants to participate via FPI, और यहाँ पे आप पार्टिसिपेशन एक्सचेंज पे कर सकते हो. सो पार्टिसिपेशन एलिजिबिलिटी अगर हम क्राइटेरिया देखें फॉर फॉरेन entities, तो उसका मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहूंगी. So SEBI had issued a circular on October 9, 2018. किस तरीके से पार्टिसिपेशन जो है वो हो सकता है. सो अगर फॉरेन एंटिटीज को अगर एक्सपोजर लेना है इंडियन मार्केट से, सो उन्हें एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में अपना हेजिंग कर सकते हैं. सेंसिटिव कमोडिटीज में उन्हें ट्रेडिंग नहीं वो कर सकते हैं. और एलिजिबिलिटी फॉर
foreign entities or person resident outside India should have an exposure in the Indian physical commodity market. So जो भी अगर commodities में exposure चाहता है उसका एक थोड़ा सा background होना चाहिए जो कि non resident है इंडिया का. और securities जो कोई भी EFEs है जिनको अगर securities में work in करना है commodities में, so उन्हें signatories को ISO MOU और signatory of bilateral MOU with SEBI उन्हें इस process को पूरा follow करना होगा, उनके साथ एक MOU करना होगा. And यहाँ पे if such EFs are also registered with SEBI as foreign portfolio investors FPIs and foreign venture capital investors, they are permitted to participate in commodity derivative segment. Minimum net worth criteria of any EFE should be US dollar 5 lakhs. An EFE can open trading account with only one of the ASBs and participate in commodity trading through the said ASB. So आपको एक ही अकाउंट है जो आप ओपन कर सकते हैं और उसी पर्टिकुलर ASB के साथ में आप जो है वो जा सकते हैं वर्किंग करने के लिए. Again, there are multiple areas wherein an FPI has to look into, और अगर हमें participate करना है Indian markets में तो हमें इन पूरे criterias को fulfill करना होगा. Currently इंडिया में 2 active brokers है जो FPI को route करते हैं. Those are Phillip Capital and Anand Rathi. Next slide. एक सर्विस साइकिल है जो भी कोल्ड स्टोरेज या एक्सचेंज पे हम किस तरीके से डिलीवरी कर सकते हैं. सो यू बीइंग अ डिपॉजिटर, आप अपने आरपी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को या ब्रांच को बोलेंगे कि मुझे डिलीवरीज देना है. वेयर हाउस में आप आपका कोल्ड स्टोरेज में आप अपना मटेरियल पहुंचाएंगे. वहां पे बैठा हुआ वेयर हाउस ऑफिसर आपको एक ENW रिसीट देगा, इलेक्ट्रॉनिक नॉन नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, जहाँ पे आप उसके बाद में आपका प्रोसेस जो है वो पूरा टेस्टिंग होगा, आपका पूरा क्वालिटी टेस्टिंग होगा. उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको एक ENW रिसीट द्वारा मिलेगा. एंड देन बेनिफिशियरी होल्डर होने के नाते आप प्लेज फंडिंग, ऑन मार्केट ट्रांसफर, ऑफ मार्केट ट्रांसफर, ई ऑक्शन या फिजिकल डिलीवरी ऑफ गुड्स कर सकते हैं. नेक्स्ट पे. So these are various banks and NBFCs जिनके थ्रू आप फंडिंग ले सकते हैं. There are these 19 banks जिनके थ्रू आप फंडिंग लेकर के अपना वर्किंग कर सकते हैं. Next slide. So if there are any further details, मेरा email ID और number मैंने यहाँ स्क्रीन पे mention किया है. आप लोग any time connect कर सकते हैं. We would be happy to help you out with all your queries. Thank you. Okay, thanks, Shraddha, for taking us through this. Very, very interesting. So very clearly, BSE has a bouquet of commodity derivatives contract, जिसमें है steel billets है, gold options in goods contract है, almond है, turmeric है, cotton है, और मैं मानता हूं कि आगे जाकर के और भी नए प्रोडक्ट्स भी, नए कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो जाएंगे. और आज का जो इवेंट का मतलब था, आज का डिस्कशन का मतलब ये था, मकसद ये था कि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट commodity markets are going to grow in our country. Commodity markets are going to are providing us, derivatives markets are providing us an investment opportunity. In addition to a hedging mechanism, is also providing an investment opportunity. You must gain adequate product knowledge and market knowledge to be able to be a good investor and to gain from the market price volatility. तो सॉरी, तो आपको आपको एक इन्वेस्टर बनना है, कमोडिटीज को एक एसेट क्लास करके आपको देखना है, तो क्या चाहिए आप? देयर आर 4 requisites. One, you need at least some capital. और मार्क टू मार्केट है, इनिशियल डिपॉजिट वगैरह होगा. तो one is mark to market, one is capital. Second is knowledge. Most important is knowledge. You need product knowledge, you need market. Okay. And the third one is you need a strategy. क्या है? Entry strategy and exit strategy. कब मार्केट में जाकर के खरीदना है और कब मार्केट से बाहर निकलना है, बेच करके निकलना है. तो एंट्री स्ट्रैटेजी, एग्जिट स्ट्रैटेजी काफी अहम है. आप you should be able to cut your losses very quickly. You should be able to book your profits, not wait greedily for prices to keep on rising. Or you should learn booking profits, cutting losses are all
strategies which one has. The last one is discipline. You need a lot of discipline to benefit from this market. क्योंकि ये जो मार्केट है किसी के लिए रुकता नहीं है. ऐसा नहीं है कि अभी इक्विटी मार्केट में आपने आज कोई बड़ा कंपनी का शेयर ले लिया, रिलायंस या L&T या whatever share you bought, and you keep it with you for maybe 6 months, 1 year. Prices may rise and then you will sell. Commodities वैसा नहीं. Commodity prices keep fluctuating virtually on a daily basis. And therefore you got to have discipline, got to have application of mind. And when you have that application of mind, together with product knowledge and market knowledge, and together with your commercial intelligence relating to market dynamics and market drivers, I think here is a market that allows the investor to get very good returns on his investment. Okay, so with this, I think we will conclude today's event. I want to thank Shraddha from BSE for talking to all of us. I want to thank, of course, all the participants for so actively participating in this. I want to thank IMC, Anita Naik, and the IT team for helping us with this platform. Anita will keep sending you emails and messages about our future events. And I request all of you to participate in all our events so that there is a lot more awareness, education, and training about commodity derivatives market. So with this, we will bring today's event to a close. Good luck. God bless you all. Take care. Thank you.